सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। अज दी वीडियो विच +1 क्लास दे फिजिक्स से टॉपिक वर्क पावर एंड एनर्जी नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज। इस आंसर आएगा सी ऑप्शन, बिकॉज अदर नेम ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, I cap dot j cap is equal to j cap dot k cap is equal to k cap dot I cap is equal to, इस आंसर आएगा 0, बिकॉज I dot j ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करांगे तो उसका आंसर आएगा I मैगनीट्यूड दैन j मैगनीट्यूड which is equal to 1 multiply by 1, because I and j यूनिट वैक्टर हैं तो I का मैगनीट्यूड 1 होएगा, j का मैगनीट्यूड भी 1 होएगा एंड I ਅਤੇ j विच एंगल है cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 0 के बराबर होंदा है, इस करके इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a vector dot b vector is equal to ab, then a vector and b vector are always, इस आंसर आएगा सी ऑप्शन, because dot product is equal to a b cos theta and in this case theta is equal to 0 degree, so a and b are collinear to each other. Next question, if a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to 2I cap minus j cap, then the relation between these two vectors is। a ਅਤੇ b ਦਾ रिलेशन फाइंड करना है कि a ਅਤੇ b परपेंडिकुलर ਹਨ ਜਾਂ पैरेलल ਹਨ ਜਾਂ रिलेशन कैनॉट बी फाउंड और नन ऑफ दीज। ए ਅਤੇ बी ਦਾ रिलेशन फाइंड ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਡਾਟ b फाइंड करांगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b विच इज़ इक्वल टू, दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड ਕਰਨ ਲਈ I कंपोनेंट्स ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करांगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 2, दैन j ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करांगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 that is -2 which is further equal to 0. Now dot product is equal to 0, so these two vectors are perpendicular, that is A option. Next question, a vector dot a vector is equal to, is answer आएगा a square. It is very simple. Next, in this case I cap dot I cap is equal to j cap dot j cap is equal to k cap dot k cap is equal to, इस आंसर आएगा 1, because angle between I and I is 0 degree and cos 0 degree is equal to 1, so answer is 1. Next, if a vector is equal to I cap plus 2j cap minus k cap and b vector is equal to 4I cap minus j cap plus 7k cap, then find the value of a vector dot b vector. For dot product, again multiply coefficient of I, that is 4 minus 2 and minus 7, which is further equal to 4 minus 9, that is -5, so answer is C option. Next question, if a physical quantity is equal to the dot product of two vectors f and s, then the given physical quantity is, इस आंसर आएगा स्केलर क्वांटिटी।
अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो वैक्टर्स दे डॉट प्रोडक्ट दे इक्वल है तो वो फिजिकल क्वांटिटी की होएगी स्केलर। सो इस आंसर आएगा बी ऑप्शन स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b are perpendicular to each other and vector a and b value is given, then the value of a is, because a and b are given perpendicular to each other, so a vector dot b vector is equal to 0. Now multiply a and b, 2 multiplied by 4 that is 8, then a multiply by minus 2 that is minus 2a, then minus 2 is equal to 0. Minus 2a is equal to minus 6, which is equal to a is equal to 3. So answer is C option. Next question, the angle between a vector and b vector is, because a vector dot b vector is equal to a b cos theta, so cos theta is equal to a vector dot b vector divided by ab. By solving this, we get cos theta is equal to 1 by 2 and theta is equal to 60 degree, because at 60 degree cos 60 is equal to 1 by 2. So इस आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अलॉन्ग आई कैप। आई कैप ਦੇ लॉन्ग कंपोनेंट ਦੀ वैल्यू है 4 आई कैप, सो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इसी तरह जे का कंपोनेंट की आएगा माइनस 2 जे कैप। नेक्स्ट, if magnitudes of two vectors are 5 and 3 and angle between them is 60 degree, then the dot product of these two vectors is, magnitude means a is equal to 5 and 3 b is equal to 3 and theta is equal to 60 degree. Now dot product a vector dot b vector is equal to 5 multiplied by 3 a b and cos of 60 degree, and cos of 60 is equal to 1 by 2, that is 15 by 2. 15 by 2 means 7.5. So answer is B option. Next 13, scalar product of two vectors a vector and b vector are said to be commutative. ये मैथ स्टूडेंट्स ਨੂੰ इस बारे नॉलेज होएगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विच डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। सो आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vector plus t b vector is perpendicular to c vector, then find the value of t if value of all three vectors is given.
because A plus TB vector is perpendicular to C. So product of these two vectors is equal to 0. Dot product is equal to 0. Now by solving this, A vector dot C vector plus T B vector dot C vector is equal to 0. उस तो बाद A vector dot C vector ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ B vector dot C vector ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ C option 5. Next question. Find the dot product of two vectors which are represented by coordinates. इस विच इन्हां coordinates हों vector A is equal to 4 I cap minus 10 j cap plus 3 k cap, and similarly vector B is equal to I cap plus I cap plus 5 k cap. Then taking dot product of these two vectors, you can easily solve this question and get D option, that is 9. Next question. If x vector dot y vector is equal to 2 and magnitude of x is 2 and magnitude of y is under 2, then find the angle between x vector and y vector. X vector dot y vector is equal to magnitude of x and magnitude of y and cos of theta. This is given 2 is equal to modulus of 2 is equal to modulus of x is equal to 2, modulus of y is equal to under root 2, 2 cancelled, cos theta is equal to 1 by under root 2, that is theta is equal to 45 degree, because for 45 degree cos 45 degree is equal to 1 by under root 2, so answer is B option. Next question. If A vector and B vector is anti-parallel, then their dot product is B option. If two vectors are anti-parallel, then dot product is minus AB. And if A and B are parallel, then answer is first option AB. Next, a force of F vector is equal to 3I cap plus 4j cap plus 5k cap Newton is acting on a body of velocity V vector is equal to 2I cap minus j cap plus 3k cap meter per second. Then value of its power is equal to F vector dot V vector is given by again taking dot product of F and V. You can solve this and get value of P is equal to 17 watt by taking dot product of F and V. Next question number 19. Condition A vector dot B vector square is equal to A square B square is satisfied only if, इस आंसर आएगा
first option, when A is parallel to B vector. Next, if three vectors A, B and C are satisfying the conditions A vector dot B vector is equal to 0 and A vector dot C vector is equal to 0, then A vector is parallel to, is आंसर आएगा D option. Next question, work done will be 0 if angle between force applied and displacement is, work done is 0 if force applied and displacement and angle between this is equal to 90 degree, because cos 90 is equal to 0, so work done is 0, so answer is 90 degree. Find the value of A I cap plus B j cap modulus. Modulus of A I cap plus B j cap is given by this formula, coefficient of I square plus coefficient of j square, that is A square plus B square under root. So C is correct option. Next 27, 1 kilowatt is equal to 1000 watt and 1000 means 10 raised to the power 3. So answer is, kilo means 1000, that is 10 raised to the power 3. So answer is C option. Next question, work is negative if angle between force and displacement lies between, work done is negative, वर्क डन नेगेटिव होएगा अगर फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट विच एंगल, इस आंसर आएगा सी ऑप्शन, बिकॉज 90 तो बाद जो एंगल है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, सो इस आंसर आएगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ इज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 0, ਬਿਕੋਜ਼ cos 90 इज इक्वल टू 0. सो इस आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन 0. नेक्स्ट क्वेश्चन 30, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज क्लोज्ड पाथ इज, इस आंसर भी 0 आएगा. नेक्स्ट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अ मैन कैरिंग बैग ऑन हिज हेड ऑन horizontal road, he is, इस आंसर आएगा doing no work on back, बी ऑप्शन, बिकॉज अगेन इस विच भी एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री, इसलिए वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू 0, दैट इज नो वर्क इज डन बाय मैन. Next question 32, work done is scalar product of force and, work done is equal to force multiplied by displacement, so answer is first option. Next question,
If angle between force and displacement is acute means 90 degree तो less, work done will be, इस आंसर आएगा पॉजिटिव, बिकॉज जो एंगल एक्यूट होंदा है मीनस 90 डिग्री तो घट है तो उसकी वैल्यू की आती है पॉजिटिव, सो वर्क डन भी पॉजिटिव होएगा। अगर एक्यूट की जगह तो थानू ऑब्ट्यूस आ जाता है तो उसका आंसर आएगा वर्क डन विल बी नैगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। ये MCQ सॉल्व करने लिए थानू फॉर्मूले ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਣੇ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 mv²। velocity of the body becomes double, that is v becomes 2v², 1/2 multiply by m multiply by 4v², which is equal to 4 1/2 mv², that is it becomes 4 times, so answer is C option. Next question, SI unit of work is, SI unit of work is equal to force into displacement, and unit of force is Newton and unit of displacement is meter, so answer is first option. बाकी MCQ सॉल्व करने लिए तुसी सारे SI यूनिट्स भी याद कर लो ताकि तुहानू कोई मुश्किल ना आवे। If kinetic energy of 1 kg mass is 1 joule, then its velocity is, इस आंसर आएगा again using formula of kinetic energy. If kinetic energy of 1 kg mass, 1 kg mass means value of m is 1 and then its velocity is v², we have to find out the value of v दी वैल्यू फाइंड करनी है, and kinetic energy given है 1 joule, that is 1/2 1 v², now v is equal to v² is equal to 2 and v is equal to under root of 2, so answer is first option. वन यूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, इस आंसर आएगा 10⁻⁷।